आज का सेशन बहुत सही होने वाला है. We will discuss product management skills, types, salaries. We will discuss all of those things in this session and it's going to be super amazing. Let's quickly start. तो सबसे पहले, who is a product manager? A product manager is the responsibility, a product manager has the responsibility of being loyal to the problem. कि तुम ऐसे लोग हो जो कि प्रॉब्लम को पहले at the center of every problem, you keep the problem at the center of the whole, right? So that is extremely important, right? So a product manager is someone who understands the why of the problem, but not at a thinking level, right? But at a meta thinking level. Basically क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जब तुम बनाते हो, whenever you make any product, right? A product is a function of small improvements. dx मतलब mathematically dx करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसके सम को आप एक प्रोडक्ट बोलते हो, राइट? कभी भी ऐसा नहीं होता कि यू वुड मेक अ वन ऑफ फीचर एंड दैट वन ऑफ फीचर इफेक्टिवली टेक्स यू टू maybe $1 million ARR or something like a big business, right? So it's chunk of small features that you add together and eventually it builds up a great product. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूं, जब भी कोई उबर कोई बुक करता है तो द फीलिंग ऑफ अ कैब ड्राइवर कॉलिंग यू एंड आस्किंग यू भैया कहाँ आना है, किधर आना है, इज इट रियली दैट इंपॉर्टेंट? इज इट रियली समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट? बिल्कुल नहीं. Rather this should be completely automated, right? Now the problem is that whenever a product manager thinks of this problem, अब for example एक तुम्हें कैब ड्राइवर को 5 मिनट लग गए तुम्हें बताने में कि कहां पे आना है, right? If Uber can solve this problem and come up with some sort of a feature through which you don't even have to talk to the product, you don't have to talk to the Uber driver, right? That is something that is innovation true at the base root level. That is innovation at a meta thinking level. Meta thinking is the art to process someone's consumer's thought, like booking an Uber. Is he very happy doing it? Is he cursing the driver why he is late? A very small example of meta thinking is कि Swiggy बार-बार तुम्हें on time दिखाता है. अब is it a bug or is it a feature? I don't know, but it shows you on time. It builds up that perception that your order is on time. So we take psychological understanding of what a problem is, why a problem is important, and eventually take it to a fruition so that the end customer doesn't have to face a lot of issues. And a product is what? It's the incremental addition of small DXs through which you build a solution on top. A product manager is also a proponent of mental models, right? So that you reach the right TG, the right masses, and eventually the product scales to concurrent heights. ठीक है? तो एक प्रोडक्ट मैनेजर इज समवन हु डजंट अंडरस्टैंड द व्हाई ऑफ द प्रॉब्लम एट अ थिंकिंग लेवल बट एट अ मेटा थिंकिंग लेवल. मेटा थिंकिंग बेसिकली मींस स्मॉल ग्रैन्युलर इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्ट व्हिच इवेंचुअली टेक इट टू बिकमिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं. CleverTap is a marketing automation platform. CleverTap. Or CleverTap eventually has built so many small integrations in marketing automation that अगर तुम्हें कल को मेल करना है तो तुम इजीली कर सकते हो, तुम्हें किस टाइम पे मेल करना है वो भी इजीली कर सकते हो, किस यूजर को मेल करना है वो भी इजीली कर सकते हो, किस टाइप ऑफ यूजर को मेल करना है वो भी इजीली कर सकते हो, न्यू यूजर है, रिपीट यूजर है, किसको करना है वो भी इजीली कर सकते हो. तो CleverTap has built like 30 odd features, right, in its own product in order to build a very good product, right? And that is how you build great products nowadays. Now, what are the skill sets of a great PM, right? Number one, he's super curious about what the consumer wants, what the competition is doing, right? Looking for internal feedback so that they can improve the product in a 10x better experience preceding to the previous experience. For example, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जब तुम पहले लॉग इन करते थे, आज से 4-5 साल पहले चले जाओ, whenever you used to sign up on a website, you used to put login, email ID, phone number, etc, ABCD, right? तो तुम करते थे ये, and it used to result in a lot of drop offs कि बहुत सारे यूजर्स फॉर्म भरते भरते ही छोड़ देते थे. बट आज की डेट में तुम वही सेम चीज ओटीपी लेस कर सकते हो या ओटीपी के साथ कर सकते हो जहां पे ड्रॉप ऑफ मिनिमल है, right? So they have improved the experience which is 10x better than the previous experience. That is the first part. So you should be super curious, always looking out for new problems, new consumer wants, so that you can improve the product and build a 10x better experience in comparison to the previous experience, right? Second, a PM is the owner of a problem, right?
The PM doesn't look for solutions, but rather what the end consumer wants, right? So a Swiggy PM working on growth will not be worried about only product metrics, but also the entire user journey of the consumer. He will also be looking at NPS score क्या है, कंज्यूमर का एनपीएस स्कोर अच्छा है कि नहीं है. तो दैट इज समथिंग दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट यू आर द ओनर ऑफ द एंड result of the customer. You are not just an owner of some metrics. Third, bias is a very strong skill set for a PM. Bias means pre-built thinking, right? It is already included it should be part of the thinking of a PM. Now, what do you mean by that? For example, तुमने एक एस्ट्रोलॉजी ऐप चालू किया, राइट? एस्ट्रोलॉजर से कुछ भी पूछना इज अ बायस ऑलरेडी इन इंडियन यूजर्स, right? So because astrology is such an important part of our life that automatically तुम ऐप खोलोगे, यूजर आएंगे और वो पे कर देंगे. That is what AstroTalk has done. AstroTalk का रिटेंशन बहुत पुअर है, AstroTalk का एक्विजिशन बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक बंदा एस्ट्रोलॉजर से तो फीडबैक लेता ही लेता है. मेरी मम्मी तो लेती है, मेरी मम्मी एस्ट्रोलॉजर से पूछती है कि इसको गुस्सा क्यों आता है. That is fun. But so bias, हमेशा कंज्यूमर बायस को इंपॉर्टेंट मानो. डोंट ट्राई टू चेंज द कंज्यूमर बिहेवियर टू मच, और इफ यू वांट टू चेंज द कंज्यूमर बिहेवियर टू मच, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो ऑलवेज टेक बायस एज अ प्राइमरी मेट्रिक एंड सी कि अभी के कंज्यूमर बिहेवियर में मैं एक सर्विस कैसे बनाऊं जिससे यूजर इजीली उसको यूज कर सके. अब एक टॉपिक करते हैं. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. ये तुमसे क्वेश्चन है. डू यू थिंक बाइजू के सेलिंग टैक्टिक्स रॉन्ग है? गिव मी अ यस और नो, or give me a feedback कि बाइजू के selling tactics, are they good or are they bad? I completely understand that बाइजू के selling tactics might be wrong for a lot of people, but fundamentally they have built a learning pedagogy which is helping a lot of students. So from a product standpoint, their product is good, but are they selling it the right way? Completely okay with that कि गलत है वो. But from a product standpoint, they have built a very good product so that education is fun. You can go on the app, you can learn whatever you want, whenever you want, from whoever you want, right? And that is something that they essentially do. So I am telling you, from a selling tactic perspective, they might be wrong, but from a product growth perspective, they are right. And the last part is, a PM is an ever learner. एवर लर्नर का मतलब समझते हो? एवर लर्नर का मतलब है जो कि बेसिकली हमेशा सीखता रहता है. And one of the very good ways of learning is go to any website, try to see the product if you like the product, and then eventually scale it to and write about it on LinkedIn. And writing is the best way to learn about a product, right? So it's a collaborative role and it needs trust. 4 points. A PM is super curious, always looks incrementally what is important and what is better than the current user paradigm. Second, a PM is the owner of a problem of the entire consumer journey, right? Not only just some product metrics कि मेरा engagement इतना बढ़ गया या मेरा कुछ और बढ़ गया, ठीक है? Bias is a very strong skill set for a PM. Fourth, a PM is an ever learner. You always keep looking into newer and newer products so that you are effectively, you become a very good storyteller, and it's a collaborative role so that it builds trust also. A PM is fundamentally the artist of the digital canvas. बिकॉज आज की डेट में प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कंपनीज में होता है. अ पीएम इज आल्सो द गार्डियन ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन टू द एंड यूजर थ्रू द लेवरेज टू द इंटरनेट. सो a PM becomes a sales guy, a tech guy, a design guy, a ops guy, and combined, right? If the desired outcome is intended for the user. Now a PM is a layered role. इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है जिसका मतलब होता है एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पीएम के लिए, क्योंकि जैसे ही तुम फीचर से प्रोडक्ट की तरफ जाते हो, एज यू मूव फ्रॉम अ फीचर लेवल टू अ प्रोडक्ट लेवल, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ambiguity plays a very important role because you become less and less clear about the product requirements. So you have to build a strategy, build a theme, from a theme build a roadmap, and from a roadmap come to a feature which a product analyst or a APM or a PM will actually solve. Different types of PM. Growth PM is something that has become very popular in the last few years, right? ग्रोथ पीएम और एक पीएम में एक डिफरेंस होता है, फंडामेंटल डिफरेंस होता है. ग्रोथ पीएम्स आर स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी.
अब मेट्रिक्स दो तरह के होते हैं. एक मेट्रिक होता है जिसे बोलते हैं बेसलाइन मेट्रिक्स, जो कंपनी के मेट्रिक्स होते हैं कि कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का एनपीएस कितना है, कंपनी का सीसैट कितना है. ये कंपनी के बेसलाइन सर्विस के मेट्रिक्स है, राइट. उसी तरह फिर होते हैं लीडिंग मेट्रिक्स, जो प्रोडक्ट के मेट्रिक्स होते हैं कि प्रोडक्ट का कितना एंगेजमेंट है, प्रोडक्ट का कितना रिटेंशन है, प्रोडक्ट कितना यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है. ये लीडिंग मेट्रिक्स आर टाइड टू द बेसलाइन मेट्रिक्स, राइट. बट ए ग्रोथ प्रोडक्ट मैनेजर टाइज himself very close to the baseline metrics of the company. The growth product manager will see all initiatives which take care of revenue, growth, business, etc., and ensure that as a growth product manager I would be able to drive this for the company, right. They will not be looking at just product metrics, they will be looking at baseline business metrics. While all other PMs keep their goals in line with the business, the growth PM, it is the primary focus of a growth PM. So this could be at any cycle, any stage. So growth PM will primarily be towards so a growth PM will work primarily with sales and marketing and engineering for features. Obviously, what are the pitfalls of a growth product manager? Too much focus on revenue and it goes berserk. मतलब वो सिर्फ पेज पे फॉर्म लगा देंगे कि और लीड्स कहां से आए और चीजें कहां से बने. तो इट्स अ पिटफॉल कि you lose track of the quality of the product, right. एडवांटेज क्या है कि ग्रोथ प्रॉब्लम्स आर वेरी रैम्पेंट, वी आर इन अ स्टार्टअप कल्चर, सो ग्रोथ पीएम सबको चाहिए, राइट. They should be focusing on a lot more on user research, a lot more on psychology, and a lot more on understanding whether this problem is worth solving from a product standpoint. Next is the technical product manager. A technical product manager is someone which is very fairly easy to understand. He is the person who takes care of breaking down all the requirements from a technical standpoint, building an architecture from a engineering standpoint. कि अगर मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल बाइजू को एक लाइव क्लास प्रोडक्ट बनाना है या किसी भी कंपनी को एक लाइव क्लास प्रोडक्ट बनाना है, तो ये टीपीएम बैठेगा और देखेगा कि हमें हमारे लिए कौन से एपीआईज बनने चाहिए, कौन सी फंक्शनैलिटी बननी चाहिए, what should be the feature of those particular functionalities, should we eventually build something at a particular architecture level कि इस तरह का आर्किटेक्चर होना चाहिए. So they dedicate a lot less time on product marketing and growth and spend a lot of time from an engineering standpoint. इसमें जनरली वो लोग होते हैं अच्छे जो जनरली सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से आए हैं and they eventually want to move into a TPM kind of a role, right. So there is a very strong bias towards building an architecture, building a very pristine engineering, but not a lot of focus on the growth side. So yahan pe who can transition here? Anyone from a software background, anyone who has an understanding of technical systems can move into a technical product manager kind of a role. What are the pitfalls? These product managers try to solve engineering problems which they are good with, but they don't come up with the why of the problem. The why of the problem is a challenge. इनका प्लस पॉइंट क्या है? These PMs are very good with engineers and it takes no time to gain their trust and respect because you are coming from an engineering background, right? So what should you focus on? You should focus on business sense, user empathy, to see the bigger picture and why you should build a certain kind of product. Next is the data PM. Now this is also very, very interesting. Another self-explanatory title. A data PM is someone who closely works with the data team, right, and comes up with analysis, insights, and tries to build features on top of it, right. This is primarily in companies where there is a lot of data, like Flipkart, like Amazon, like streaming apps like TikTok, Hotstar, etc. They will spend a lot of time with the data scientist to come up with the right set of algorithms to showcase recommendations. जैसे Flipkart में अगर recommendation product बनाना है तो आपको data product manager बनना पड़ेगा. अगर आपको Amazon में supply chain efficiency को improve करना है तो आपको एक data product manager बनना पड़ेगा. So data product manager is a great career choice for someone who loves working with engineers. Sorry, with numbers, right? So data product managers should be very well versed, or at least should have some background in machine learning, in SQL, etc. It is very easy for most data scientists to move into this particular kind of a role. The pitfall of this role is that if you put too much insight on data, right, you sometimes lose the bigger picture, which basically means from an anecdotal perspective कि अगर हम खाली देखो, एक चीज याद रखो यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
डेटा एक पीएम की लाइफ में इज ओनली अ थिंकिंग वेक्टर. व्हाट आई मीन बाय थिंकिंग वेक्टर का मतलब होता है कि डेटा एक सोचने का तरीका है, दूसरा तरीका है एनेक्डोटल एविडेंस. और यहां पे डेटा प्रोडक्ट मैनेजर्स बहुत टाइम स्पेंड नहीं करते. हो सकता है कि आपको डेटा दिखा रहा है कि आपका साइन अप बहुत अच्छा है, बट उसका ये भी मतलब हो सकता है कि कहीं मैं गलती से मेरा एपीआई किसी वजह से कोई कोई गलत रिस्पॉन्स रजिस्टर तो नहीं कर रहा, कुछ और चीज तो नहीं हो रही. तो डेटा पीएम लेट गो ऑफ दिस लार्जर पिक्चर एज अ प्रॉब्लम, राइट? सो एडवांटेज क्या है? बीइंग इक्विप्ड विद गुड एनालिटिकल स्किल्स, यू कैन figure out product funnels, business funnels, and what you should focus on. Again, these people should focus a lot more on the why. Why should we build, right? Clubbing research and quantitative data together to come up with good features, right? The next one is the business PM. Business PM is your typical product manager, जो कि consumer product manager होता है. In this case, a business PM takes care of all from the product metrics, कि मेरे product metrics क्या है, उनका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट है. बट यहां पे वो ग्रोथ पीएम की तरह बहुत ज्यादा सेल्स और मार्केटिंग के साथ काम नहीं करेगा. द बिजनेस पीएम विल वर्क वेरी क्लोजली ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि मैं प्रोडक्ट के फीचर्स को कैसे इंप्रूव कर सकूं या प्रोडक्ट की फनल्स को कैसे इंप्रूव कर सकूं. फॉर एग्जांपल, कल को तुमने एक प्रोडक्ट बनाया, रिकमेंडेशन प्रोडक्ट फॉर फ्लिपकार्ट. So you would eventually try to understand that how do I give better recommendations, and उनको measure करने का तरीका होगा number of people who click on a recommendation divided by number of people who see the recommendation. A business PM is someone who has all the skill sets, from user psychology, from quantitative data, from qualitative data, from engineering understanding, and eventually becomes the canvas, the artist of the digital canvas. One of the pitfalls of most business PMs is they don't understand technology or design. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कलर थ्योरी भी समझें, हम डिजाइन भी समझें. डिजाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद इंटरनेट प्रोडक्ट्स. नाउ व्हाट इज देयर एडवांटेज? दे आर गुड थिंकर्स and are able to paint and see the bigger picture at scale, right? What should you focus on? You should focus on how tech works, how design works, how do you develop an eye for detail and rigor in the design. That's what I'm talking about. तो 4 types of business PMs पता चल गया. 4 types of PMs क्या क्या है, ये क्लियर हो गया. गाइज, जिसने भी अभी वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो लाइक कर दो. मैं बहुत मेहनत से ये मेहनत करता हूँ, आपके लिए पीपीटीज बनाता हूँ. प्लीज जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज 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 कर दो. थैंक यू.